A packed day today, and we will continue to get you those live updates. But for the moment, let's shift our attention now. Rahul Gandhi is all set to embark on another yatra, and this time this is against the alleged vote theft. As part of the Voter Adhikar Yatra, Rahul Gandhi will be crisscrossing poll-bound Bihar, covering more than 20 districts in 16 days. The yatra starts from Bihar's Sasaram and will culminate in Patna. And the culmination of the yatra will be on the 1st of September. The Congress allies in Bihar, including the RJD, the CPI-ML, the CPM and CPI, are likely to participate in the march along with Rahul Gandhi. Now, the Congress party has equated Rahul Gandhi's march to Mahatma Gandhi's struggle, calling the yatra a second freedom struggle being waged to save voting rights. Listen in to what the Congress and allies are saying. सबसे बड़ा अधिकार अगर कोई है, धर्म, जाति, इन सब के अलावा, तो वोटिंग राइट, वोट का अधिकार, आज वही खतरे में है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम उसी को बचाने के लिए एक दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए निकले। राहुल गांधी जी बिहार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अगर वन पर्सन वन वोट नहीं होगा तो देश में तानाशाही आएगी, और जो भाजपा लाने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हमारी ये यात्रा है, जन यात्रा है। याद कीजिए 17 तारीख को बिहार के सासाराम से हमारी वोट अधिकार यात्रा, एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू होने जा रही है। आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसीलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है। अगर हम वोट नहीं दे सके तो हम आजाद भारत में आजाद तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। जिस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे हैं। राहुल गांधी जी कल यात्रा कर रहे हैं सासाराम से पटना तक के। 17 दिन की यात्रा होगी, 1300 किलोमीटर की यात्रा। और इसमें जो वोटर अधिकार यात्रा है ये, कि जो वोट की जो चोरी हो रही है उसके खिलाफ यात्रा है। जन जागरण होगा, यूथ लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, ताकि जो वोट चोरी करके ये सरकार बना रहे हैं उसके खिलाफ ये लड़ाई है। तो ये अभी जो सरकार बनी है वोट चोरी करके बनी है। कल से सासाराम से हम लोग जो है वोटर अधिकार यात्रा जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कल हम सब महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, साथ में राहुल गांधी जी भी हम लोगों के साथ जो है यात्रा में कई दिनों तक कई जिलों में हम लोग जाएंगे। और इस यात्रा में लोगों को जो संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है वोट देने का, हम लोगों की कोशिश है लोगों को जागरूक करें ताकि किसी भी मतदाताओं का जो है नाम ना छूटे। My colleague Sabyasachi is live with us on the broadcast. And Sabyasachi, what are the details of Rahul Gandhi's yatra? From when is it starting? It will go until the 1st of September. And how will Rahul Gandhi be reaching out to the people against this charge of vote theft? See, the leader of opposition, Mr. Rahul Gandhi, will begin his yatra today at around 11:30 from Sasaram. Now, the yatra will go on for 16 days and it will go through 23 districts, whereas the leader of opposition wants to connect to the people in the state of Bihar as much as possible, and the yatra will conclude with a grand rally in Patna. The opposition today, the Mahagathbandhan allies will also be present today. Now, Tejasvi Yadav, in fact, yesterday confirmed about his presence, that he, along with the leader of opposition, Mr. Rahul Gandhi, and other parties of the Mahagathbandhan will be present today as the yatra will begin. And now, time and again, the opposition has been alleging that with the special intensive revision of voter list in the state of Bihar, it is an exercise of vote bandi, and now this particular exercise with
will disenfranchise around lakhs of voters, particularly from the minority, from the Dalits, from the other backward castes. Now, this particular point has been continuously put across by the opposition leaders time and again, whether it is outside the parliament or inside the parliament. And Mr. Rahul Gandhi, in fact, in the past also has leveled serious allegation against the EC, calling it an atom bomb when he had put out the evidences related to one of the constituencies in the state of Karnataka. And now the opposition stands united as far as the vote chori under the special intensive revision of voter list is concerned, whereas on the other hand, the EC time and again has been refusing the allegation that has been made towards them against different opposition leaders and different opposition parties. But today's yatra will be a grand. In fact, yesterday also the Congress pointed out that whenever Mr. Rahul Gandhi had carried out any such yatra, it had put across a new leaf, and it is for the democracy. In fact, Rahul Gandhi yesterday also put out a post in social media X stating that this particular yatra is very much important to save the democracy, with one motto, that is one person, one vote. Okay, all right, Sabyasachi. In fact, there is more update coming in as well. Apart from the Congress party continuing this charge, we are also going to see the first